సైడ్ సైడ్ కోరుకుంటున్నాము. సార్లమ్మ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఇన్ఛార్జ్ అలర్ట్గా ఉండండి. సార్లమ్మ ఎంట్రన్స్ గేట్. సార్లమ్మ ఎగ్జిట్ గేట్ కూడా రెడీగా ఉండండి. కీస్ ఇన్ఛార్జ్. Sarlamma entrance gate in the be alert. It's really very great for all of us. Third time I am attending, very fortunate, and I think I am the only governor consecutively 3 years I am attending, and I am really fortunate for that. And I love the people of Telangana and love the people of all our Adivasi tribal sisters and brothers, and we are all very happy. And I have adopted 6 villages in the tribal area in Telangana, and we are focusing on that. And all the ministers have come here. Madam Minister is here, and they are also supporting, and I am really very happy, and I wish them all the best. Thank you. Minister has come. Minister will take some. Excellency and other dignitaries, already Madam expressed her very good remarks in this festival. So I will say only few words in Hindi. आदिवासी जनजाति समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में, न केवल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इस इलाके में, बल्कि 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग पूरे देश में रहते हैं। और ये जो इलाका है तेलंगाना के सुदूरवर्ती गांव में और छत्तीसगढ़ के सीमा में,
ये एक सबसे बड़ा उत्सव है जनजातीय आदिवासी समुदाय का, और मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। मैं देश भर के आदिवासियों को यहाँ से माँ समाखा सरला के धरती से उनको प्रणाम करते हुए, यहाँ के तमाम श्रद्धालु जितने भी यहाँ हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सभी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, मैं सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। और यह उत्सव, यह त्यौहार, यह फेस्टिवल आप सबके लिए बेहतर हो, प्रभावी हो और जीवन उन्नति का हो। मैं यहाँ से हिंदी से इसलिए बोल रहा हूँ कि देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज को यहाँ के त्यौहार के बारे में जानकारी हो और किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आते हैं एक बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मैडम एक्सीलेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार के तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। Actually 3 years I am attending and I'm really fortunate for that, and I love the people of Telangana and love the people of all our Adivasi tribal sisters and brothers, and we are all very happy, and I have adopted 6 villages in the tribal area in Telangana, and we are focusing on that, and all the ministers have come here, Madam Minister is here, and they are also supporting. And I am really very happy, and I wish them all the best. Thank you. Minister has come, Minister will tell us. Excellency and other dignitaries, already Madam expressed her very good remarks in this festival. So I will say only few words in Hindi. आदिवासी जनजाति समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में, न केवल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इस इलाके में, बल्कि 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग पूरे देश में रहते हैं। और ये जो इलाका है तेलंगाना के सुदूरवर्ती गांव में,
और छत्तीसगढ़ के सीमा में ये एक सबसे बड़ा उत्सव है जनजातीय आदिवासी समुदाय का, और मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। मैं देश भर के आदिवासियों को यहाँ से माँ समाखा सरला के धरती से उनको प्रणाम करते हुए, यहाँ के तमाम श्रद्धालु जितने भी यहाँ हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सभी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, मैं सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। और यह उत्सव, यह त्यौहार, यह फेस्टिवल आप सबके लिए बेहतर हो, प्रभावी हो और जीवन उन्नति का हो। मैं यहाँ से हिंदी से इसलिए बोल रहा हूँ कि देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज को यहाँ के त्यौहार के बारे में जानकारी हो और किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आते हैं एक बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मैडम एक्सीलेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार के तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారికి, స్టేట్ మినిస్టర్ గారికి, సీతక్క గారికి అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ నమస్కారం. థర్డ్ టైం ఇక్కడ నేను వచ్చింది, గవర్నర్గా ఇక్కడ థర్డ్ టైం వచ్చింది. అండ్ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, సమ్మక్క సరళక ప్రార్థిస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజలందరూ, గిరిజనుల ప్రజలందరూ, భారత ప్రజలందరూ సంతోషంగా, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇక్కడ రావడం, మీ అందరూ కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ధన్యవాదాలు. ఐ విష్ ఆల్ అవర్ tribal sisters and brothers a very very happy Medaram Jatra. This Jatra is a great event. Lakhs and lakhs of our brothers and sisters attend this program, and the blessings of the sisters Sammakka and Saralaka is really very great for all of us. Third time I am attending, very fortunate, and I think I am the only governor consecutively 3 years I am attending, and I am really fortunate for that. And I love the people of Telangana and love the people of our all our Adivasi tribal sisters and brothers,
and we are all very happy, and I have adopted 6 villages in the tribal area in Telangana, and we are focusing on that, and all the ministers have come here. Madam Minister is here, and they are also supporting, and I am really very happy, and I wish them all the best. Thank you. Minister has come. Minister will take some. You also take some. Wish me. Excellency and other dignitaries, already Madam expressed her very good remarks in this festival. So I will say only few words in Hindi. आदिवासी जनजाति समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में, न केवल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इस इलाके में, बल्कि 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग पूरे देश में रहते हैं। और ये जो इलाका है तेलंगाना के सुदूरवर्ती गांव में और छत्तीसगढ़ के सीमा में, ये एक सबसे बड़ा उत्सव है जनजातीय आदिवासी समुदाय का। और मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। मैं देश भर के आदिवासियों को यहाँ से माँ समखा सरला के धरती से उनको प्रणाम करते हुए, यहाँ के तमाम श्रद्धालु जितने भी यहाँ हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सभी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, मैं सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। और यह उत्सव, यह त्यौहार, यह फेस्टिवल आप सबके लिए बेहतर हो, प्रभावी हो और जीवन उन्नति का हो। मैं यहाँ से हिंदी से इसलिए बोल रहा हूँ कि देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज को यहाँ के त्यौहार के बारे में जानकारी हो और किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आते हैं एक बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मैडम एक्सीलेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार के तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారికి, స్టేట్ మినిస్టర్ గారికి, సీతక్క గారికి అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ నమస్కారం. థర్డ్ టైం ఇక్కడ నేను వచ్చింది.
గవర్నర్గా ఇక్కడ థర్డ్ టైం వచ్చింది. అండ్ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, సమ్మక్క సరళక ప్రార్థిస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజలందరూ, గిరిజనుల ప్రజలందరూ, భారత ప్రజలందరూ సంతోషంగా, ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇక్కడ రావడం, మీ అందరూ కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ధన్యవాదాలు. I wish all our tribal sisters and brothers a very, very happy Medaram Jatra. This Jatra is a great event. Lakhs and lakhs of our brothers and sisters attend this program, and the blessings of the sisters Samakka and Saralaka is really very great for all of us. Third time I am attending, very fortunate, and I think I am the only governor consecutively 3 years I am attending, and I am really fortunate for that. And I love the people of Telangana and love the people of all our Adivasi tribal sisters and brothers, and we are all very happy. And I have adopted 6 villages in the tribal area in Telangana, and we are focusing on that. And all the ministers have come here, Madam Minister is here, and they are also supporting, and I am really very happy, and I wish them all the best. Thank you. Minister has come, Minister will take some. You also take some. Vishnu. Excellency and other dignitaries, already Madam expressed her very good remarks in this festival. So I will say only few words in Hindi. आदिवासी जनजाति समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में, न केवल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इस इलाके में, बल्कि 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग पूरे देश में रहते हैं। और ये जो इलाका है तेलंगाना के सुदूरवर्ती गांव में और छत्तीसगढ़ के सीमा में, ये एक सबसे बड़ा उत्सव है जनजातीय आदिवासी समुदाय का। और मुझे दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। मैं देश भर के आदिवासियों को यहाँ से माँ समक्खा सरला के धरती से उनको प्रणाम करते हुए, यहाँ के तमाम श्रद्धालु जितने भी यहाँ हमारे ब्रदर एंड सिस्टर सभी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, मैं सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। और यह उत्सव, यह त्यौहार, यह फेस्टिवल आप सबके लिए बेहतर हो, प्रभावी हो और जीवन उन्नति का हो। मैं यहाँ से हिंदी से इसलिए बोल रहा हूँ कि देश भर में रहने वाले आदिवासी समाज को यहाँ के त्यौहार के बारे में जानकारी हो और किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आते हैं एक बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मैडम एक्सीलेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार के तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई।
సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారికి, స్టేట్ మినిస్టర్ గారికి, సీతక్క గారికి,